Okay, we are live. Hi everyone, whoever's joined us. We'll wait for a couple of No. minutes. So I know long time no see. Hi everyone, I am Snehal. It's been a really long time I've been here on the Blue Circle workshops, but we are back. We have a topic today under Project Gaia, which is oriented towards women and women things completely. But we have a very interesting topic today, and I have with me my co-host Ashlesha and a very special Hi. guest who will be talking about everything related to travel, solo travel, how to travel when you're a woman and you want to solo travel, how do you take the first step. So we'll cover a lot of things today, but I have a very special guest with me, Madhuvanti, who will be sharing her tips and tricks and all the information she has with us. But I'll hand it over quickly to Madhuvanti to give a quick intro. Hello. Thank you. Thanks, Nehal, for nice words. Okay. My name is Madhubanti. I am from Silvassa. If you know, it's a union territory. So I am solo traveler myself. I'm a mountaineer and I also have my own travel consultancy. So, traveling solo happened to me for since I'm of 19 years, and Wow. when I first traveled solo, it was just a train journey from Pune to Nagpur. But and during that time, there was no advanced technology. There was no mobile phones, nothing. But still, that one travel really fascinated me towards traveling solo. Of course, I travel in groups. I travel with my family, and also I love traveling solo. So, and that was the very thought when I was in a bank and I left the banking and started my own travel consultancy. So that was the only thought behind why not do something which you are passionate to do. So I started with this thought, and I really enjoy traveling, whether it is solo, whether it is group, or whatever. Amazing. That's so good to know that you left your job in a bank and like you started your own thing, following whatever your passion is. Amazing. Kudos for that. I think a lot of women out there are a little skeptical about following their dreams and passions. But again, one more inspiration we have with us. But yes, more of that later, maybe of how she made the switch. But today we're going to focus our attention on the travel part. Yeah. So again, like you quickly told us about what got you started onto traveling Mhm. and what was your first experience. But one quick question I think me and Ashlisha both would have is like we all think about like solo traveling. I also want to do the solo travel. But as a woman, if you plan to travel solo, there are like a lot of questions that come in your head. So the first Yeah. question would be how did you convince yourself to start this, like to take the other steps, like finding the place and travel and itinerary, everything comes after that. But the first step would be to convince myself that yes, I can do this maybe. So what motivated you, or like what sort of was your inspiration behind that? Uh, so basically, when I was 15 years, I started doing treks and all with the group. So when I visited Himalayas when I was 15 years, that really fascinated me. Seeing and being in Himalayas, trekking in Himalayas is something out of the world experience. And once you are into the mountains, there's no way back. You have to return back to the mountains. That's what they say. And so this happened with me that when I as a child, when I traveled with my parents, I've seen so many cultures, people, how they behave, and different food cultures they have in our country. India is like such a diverse culture that we have every 100 miles, they say the language changes. Yeah, everything So, changes. Yeah. and it is quite fascinating to see how we have different cultures, different food cultures, different festivals, how people behave in different ways, the languages, and there is a similarity in languages as well. So that this everything fascinated me.
you know, uh, checking new places and talking to new people, testing new food and culture. That really fascinated me, and somewhere that was only because when I started doing travels from my childhood, I think that inspired for my, solo travels. Really nice. That's great to know. Ashlesha, will you take the next question? Yeah. The next question is, which type of travel can be safer for women? Solo travel or a group travel? What do you think about that? Okay. So my advice will be, if a woman will be traveling first time, Hmm. and if she is not really very confident enough, she should travel in a group, like-minded people, or somebody Mhm. whom she know or she trust, or else she can just travel in a group. Ladies groups normally have such this thing facilities, that these are all woman friendly groups, and you know Nowadays you have a lot of this programs, right, that ensure Yeah. like this groups yeah, who are traveling together, and you can just enroll without the fear of like exactly. you don't know someone, Hmm. and they organize this team bonding sort of activities. I had once gone to that, and that's how I have like developing that little bit confidence of maybe doing a solo travel on my own. Exactly. But as of now, I'm just like trying to like mingle with people in a group and like finding my way through that. Right. Yeah. So you can start with either traveling along with your friends, or you can just enroll in one of the ladies' special programs if you're not confident enough, by traveling alone, and then slowly, probably you will have a passion about traveling solo. And once you just have to get have the proper confidence that you can travel all on yourself. And once you have that confidence, then you can just plan and you can go places. Right. There's no looking back. Okay. So now another question to you would be like, let's say like I have gotten the confidence, I am now planning to do a solo travel. So what would be my first step? Like, how do I find a location where I want to go, or the things about like specifically related more to related to the safety part of it? Okay. Yeah, so first of all, if you will have to, you just have to find out the place. Where do you want to travel exactly? For example, if you want to travel to, say, Himachal, or say Madhya Pradesh, so you will have to do some research on yourself. What is there to check? What you can actually see there? How can you travel? The modes of transport, how, whether you can travel by flight, whether you can travel by bus, or there's a train available over there. Also, you can check out some stays options, because of the technology now, these things are quite easy to see whether you have good stays available. There are so many homestays and Airbnb options which can actually enable you to use someone's home, or a family stay with a family, which can be quite useful, quite helpful, and quite safe. Also, if you look for especially for Airbnb and TripAdvisors, they have a review system, so you can Yeah. check the reviews. Yeah, you can check the reviews whether it is a good experience, woman friendly, safe for women. They have listed it. They have even listed some stays as woman friendly and all. So you can check on that, and you can do the research about the place. Yeah, and then you will have to take care of all the minute things, like how are you going to be there, and then what will be your mode of transport, how are you going to reach to that particular stay, whether there is any pickup and anything is involved. uh, so even the contact numbers and everything, and then make a list of it. Make a list of itinerary, or you have a ready itinerary, which day where are you traveling, which day what are you doing.
And I'll say when you're going all alone, all on yourself, I think you have to have your family like given told about it. So your family should know about where, what is your plan exactly, and what you're going to do, where you're going to be. Yeah. Someone um, needs to be updated. yeah, yeah. And even during the journey, you can update, so I reached so and so place. I'm here today, or I'm doing such and such activity, so that the family knows your whereabouts. In case of any emergency, or if you're not contactable, then for them, the path to find you will be quite Will be easier. easy. Yeah. Yeah. So that thing is there nowadays. We have GPS trackers. We can share the locations if you feel like, if you really feel, if you are going to some place which is, you feel that it is not safe, you can just share the location with your family members, so that they can keep on tracking you. They can check on you. So many things are available. And I think previous planning, and then updating your family, that is the most Hmm. important thing. Also, I would like to add, for the women's safety purpose, nowadays we are so much on social media that everyone has Facebook account, everyone has WhatsApp numbers and everything. So what happens is, we are quite excited about, we are traveling, and Yeah. we start putting status updations, checked in Hmm. at so and so location. So I will say, avoid that. You can probably put whatever status locations and whatever photos after you complete the trip, because there is a possibility that somebody, or some stalker, or somebody who's following you, and probably end up in the location, and that is not safe enough for a lady traveling alone. So I think, we should you should have some patience, and try to avoid putting up statuses every now and then, every 5-10 minutes. Where have you reached, where have this information is for our family, but not for everyone on social media. Yeah, absolutely right. And we have a request of like doing a mix of Hindi English. So we'll switch to that also. But बहुत ही important point इन्होंने बोला है कि सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना जरूरी नहीं है. And I think वो एक्साइटमेंट में हम लोग डाल ही देते हैं even if you don't want to. And personally for me, I have to like restrict myself. Maybe once I have left that place, I do put in the check-ins. But definitely बहुत बहुत important point, and especially for traveling even in a group, I think it's very important not to let everyone around you know where you are at that particular location or like at that particular point. Yeah, right. एंड आई थिंक विल क्विकली ऑल्सो टॉक अबाउट अगर आपको डायबिटीज है और उसके साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या प्रिपरेशन Hmm. लगेंगी. तो फर्स्ट थिंग तो मधुवंती जी ने हमें बता दिया है कि लाइक यू डू योर ओन रिसर्च, गूगल रिव्यूज पढ़ो, सब कुछ देखो कैसा क्या है. अनदर क्विक टिप इज लाइक आई ऑल्सो टॉक समटाइम्स ऑल्सो टॉक टू द एयरबीएनबी ओनर्स और लाइक द होटल मैनेजर्स कि आसपास क्या घूम सकते हैं, कैसे जाना है. दैट ऑल्सो गिव्स यू अ Yeah. क्विक आइडिया कि कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. But I think with diabetes it becomes sort of an added responsibility on you कि आपको साथ में सारी चीजें भी कैरी करनी है. तो Hmm. first and the foremost thing is always have 2 packs of your medical supplies with you. One which is always with you in your carry bag or your backpack, और एक जो आपके दूसरे बड़े वाले लगेज में होगा. काफी बार ऐसा होता है कि इवन लाइक आई हैव बीन टाइप 1 डायबिटिक फॉर 20 years. काफी बार ऐसा लगता है अरे क्या ही जरूरत पड़ेगा, एक ही इसमें लेके जाते हैं. बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं पे भी न्यू जगह पे जा रहे हो, यू मे नॉट नो विच डॉक्टर इज अवेलेबल, विच फार्मेसी इज नियर बाय, या उसके पास वो मेडिसिन है भी कि नहीं है. बिकॉज अ लॉट ऑफ Hmm. द टाइम्स डायबिटीज का सब मेडिसिन सब जगह पे अवेलेबल नहीं होता है. एंड Right. स्पेशली इफ यू आर लिविंग विद टाइप 1 और यू आर ऑन इंसुलिन, तो हर इंसुलिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास 2 पैक्स होने चाहिए. एक आपके कैरी बैग में होगा जो आपके साथ रहेगा हमेशा, और दूसरा आपके जो बड़े सूटकेस में होगा या बड़े एयर बैग में होगा वहां पे रहना.
and you have to carry everything, like don't forget anything, and you have to keep set of two for everything. Your insulin Yeah. needs to be two, like two vials, syringes का 3-4 एक्स्ट्रा पैक करो, ब्लड टेस्ट Hmm. स्ट्रिप्स पैक करो साथ में, इंसुलिन अलग से होना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट योर कीटोन स्ट्रिप्स आल्सो, बिकॉज यूजुअली घर पे हम कीटोन स्ट्रिप्स नहीं रखते हैं, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग एंड इफ गॉड फॉरबिड देयर इज एन इमरजेंसी, यू नीड टू हैव एवरीथिंग विथ यू. You should. तो ये बहुत ही जरूरी है. एंड वन लाइक व्हेन डिड आई रियलाइज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिंग एवरीथिंग इन टू was I was traveling. It was a very short trip, 2-3 दिन का ट्रिप था. मुझे लगा क्या ही जरूरत है, लाइक सब कुछ मेरे पास ही Hmm. रहने वाला है. एंड यू विल नॉट बिलीव, आई वाज टेकिंग माय इंसुलिन और वो वायल गिर के टूट गया, एंड आई डिडंट हैव अ बैकअप. And I was like, now Oh. what do I do? And we were like in a hill station sort of a place. तो अभी क्या करेंगे? So it was a very panic stricken situation for me at that point of time. But luckily there was a pharmacy who had that insulin available. So I could get it, but that may not always be the case. So दूसरों के Okay. experiences सीखो, because it can become very panicky, and if it happens like late at night जब आपको इंसुलिन लेना है और Yeah. टूट गया या नीचे सिरिंज गिर गया या पेन नीडल टूट नीचे गिर गया है, तो आप उसको Hmm. यूज नहीं कर सकते वापस. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा दो चीजें रहे, इवन इफ इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप. अगर आप 2-3 दिन के ट्रिप पे भी जा रहे हो तो फिर भी हमेशा सबका दो बॉक्सेस या दो सैशेस आपके पास हर चीज का होना चाहिए. Explanation. Right. Yeah. Ashlesha, you want to add something? Yeah, I what I do is I also make sure in my research थोड़ा कि wherever I'm going वहाँ पे नजदीक कहीं पे either there's like a good hospital, good decent enough hospital, या फिर somewhere where you know I can get hold of an emergency room या फिर a diabetologist or someone like that, you know. So God forbid कुछ होगा नहीं, but I think it's just better to be prepared rather than you know taking on chances later on. So I also make sure in my research कि I'm checking कि where is the nearest hospital. Is it like 24, is it open 24 hours? What are the timings? Is the doctor good? Of course, everything on Google reviews and everything, even on Practo. So yeah, I do make sure to add that point and research on it before you know planning a trip or anything else. एब्सोल्युटली, मतलब इफ आई हैव टू ट्रैवल एनीवेयर आई गो क्रेजी. एक तो सब कुछ दो दो पैक करना है, ऊपर से आसपास जहाँ रह रहे हो वहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं वो देखो, कोई डायबिटोलॉजिस्ट है भी कि नहीं वो देखो. मतलब आई हैव नेवर Exactly. नीडेड दैट. आई गेट दैट सेंस ऑफ कंफर्ट कि आई नो इन केस अगर कुछ ऊपर Hmm. नीचे हो गया है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आई नो कहाँ जाना है. आई थिंक दैट बिकम्स वेरी Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट, especially if you're living with type Yeah. 1, because you never know, 1 minute everything is fine and the next minute your sugars are high or low. And especially if you're Yeah. eating out, or if you're doing something which is new, Hmm. like trekking for example. काफी लोग एकदम suddenly friends Hmm. के साथ प्लान बन जाता है, ट्रैकिंग करने चले जाते हैं, but you have to think beforehand like how it is going to impact you. And especially for Hmm. me, like trekking is supposed to be a cardio activity, मतलब आपका शुगर थोड़ा नीचे Hmm. जाएगा. But for me, every time I do trekking मेरा उल्टा होता है, मेरा शुगर्स बढ़ जाता है. तो I have to always keep a check Oh. on my sugars. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबका शुगर्स जैसे इम्पैक्ट हो रहा है वैसे ही आपका होगा. सो एवरी टाइम, लाइक इवन माई ट्रैकिंग, आई डू एंश्योर आई चेक माई शुगर्स एवरी 2 hours सो दैट आई एम अपडेटेड. एंड सेंसर है तो कोई इतना इशू नहीं है, बट इफ यू आर चेकिंग ऑन Hmm. ग्लूकोमीटर एवरी 2 hours यू हैव टू कीप अ ट्रैक, बिकॉज एकदम से ऊपर भी जा सकता है, एकदम से नीचे भी जा सकता है. एंड ट्रेकिंग स्पेशली, यू डोंट नो देन व्हाट विल यू डू इफ समथिंग हैपेंस टू यू, लाइक पीपल विल हैव टू कैरी यू Yeah. डाउन, और लाइक हाउ विल दे अरेंज अ Hmm. डॉक्टर. तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद डायबिटीज. I think one more thing is आपके साथ में अगर कोई आ रहा है ना, if you Hmm. especially you said कि like trekking में है या फिर normal हम्म. traveling में, तो अगर आपके साथ में कोई है या फिर आप ग्रुप में किसी के साथ में हो तो at least one of the person should know that you are into such and such condition, like you are diabetic or you एब्सोल्युटली. are, है ना. लाइक प्लस ऑल्सो आई विल से आपका जो भी पर्स या फिर पाउच होगा, यू शुड हैव a list of medicines made कि what are you allergic to, what medicines you normally take. So in case Hmm. of emergency, at least that list, जो भी लिस्ट आपका होगा, वो कोई भी रेफर करके वो आपको डॉक्टर के पास जब भी कभी लेके जाएगा, तो आपको ये एलर्जीज क्या है क्या नहीं है. समटाइम्स प्रोबेबली यू आर अनकॉन्शियस एंड नॉट एबल टू डू एनीथिंग और नॉट एबल टू से एनीथिंग. तो ये चीज़ें तब काम आ सकती है कि आपका लिस्ट बना हुआ है एंड समबडी फ्रॉम द ग्रुप नोज, पता है कि इनको ये कंडीशंस हैं
एंड दिस इज अ लिस्ट। ये नॉर्मली ये और लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनको किसी चीज से अगर एलर्जी है तो दैट यू हैव टू मेंशन। सो मेरे ख्याल से ये भी ज्यादा हेल्प करेगा इन केस ऑफ तो इमरजेंसी। जब मैं ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही थी, आई एंश्योर्ड जो हम लोग के ग्रुप लीडर है, तो उनको पता हो कि मुझे ऐसा हम्म कंडीशन है, इन केस मेरा शुगर लो जा रहा है तो मेरे बैग में शुगर कहाँ है, सो दैट दे कैन हेल्प मी, बिकॉज योर बैग कैन बी रियली ह्यूज एंड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड योर शुगर ऑल्सो. So I ensure that people know where exactly in that bag is my blood, like my test strips, my insulin, मेरा शक्कर, मेरा बिस्किट, वो सारा कहाँ है, वो भी बताती हूँ. हम्म ओके, अनीता जी का क्वेश्चन है ग्लूकोमीटर भी 2 लेने चाहिए क्या? आई हैव नेवर ट्रैवल्ड विद 2 ग्लूकोमीटर. ग्लूकोमीटर एक ही रहता हम्म है जो साथ में रहता है. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ध्यान रखना है कि आपका जो साथ वाला बैग है उसको थोड़ा केयरफुली रखे, क्योंकि अगर उसको नीचे पटक रहे हो या कहीं पे रख रहे हो और कुछ अगर टूट हम्म गया तो देन इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम. सो ऑलवेज, बिकॉज यूजुअली ट्रैवल में ऐसा होता है कि बैग आप ऊपर डाल रहे हो, नीचे डाल रहे हो, कहीं पे भी डाल रहे हो, तो स्पेशली इफ यू आर हैविंग इंसुलिन इन योर बैग, तो मैं अपने पास में ही रखती हूँ. लॉट ऑफ द टाइम्स माय फ्रेंड्स मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी, अरे इतना क्या बैग में खजाना है कि पूरा टाइम पकड़ के रखे हो. बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? मतलब एकदम किधर ऊपर डाल दिया, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रॉब्ली इंसुलिन एफिकेसी को भी अफेक्ट कर सकता है. तो ये सारी चीजें हैं, लाइक स्पेशली योर कैरी बैग वेयर वॉट एवर इज विथ यू पास में जो है, उसको अपने पास ही हम्म रखे, सो दैट एनीवेज इवन इफ इट इज हैवी, आई ऑलवेज ऑलवेज कीप इट विथ मी. ऊपर नीचे किधर भी नहीं डालती मैं, बिकॉज यू नेवर नो, किसी का पैर लग गया या टेम्परेचर चेंजेस हो गया, जैसे यूजुअली बस के ऊपर डालते हैं, वहां पे हीट ज्यादा रहता है. तो ऑलवेज आई एंश्योर दैट बैग इज ऑलवेज विथ मी, नियर मी. राइट। We yeah have another question. We और will quickly take that. Any emergency number like Women Health Center or police number which is provided by government? Uh, yeah, that we can give a list of emergency numbers and रख सकते हैं साथ में एक लिस्ट बना करके। वो पर्टिकुलर जगह के लिए अगर कोई हेल्पलाइन नंबर्स बने हुए हैं, देयर आर मेनी, कुछ लेडीज हेल्पलाइन नंबर्स भी, वुमेन सेल के भी हेल्पलाइन नंबर्स हम्म मेरे ख्याल से स्टेट वाइज अलग अलग हैं, तो Hmm. वो हम हम्म लोग साथ में रख सकते हैं। But again, um, that's very good point over there कि ये number yeah, का ये भी होना चाहिए. I have never taken account of that. हाँ, तो वो भी है। प्लस आई थिंक जैसे मेरे साथ में एक हुआ था, विच लाइक आई वुड लाइक टू नरेट अ स्टोरी कि आई वाज ट्रैवलिंग टू सम प्लेस एंड रात को आई हैव टू रीच दिल्ली। सो दिल्ली फॉर मी वाज आफ्टर दिस इंसिडेंस ऑफ निर्भया, वो थोड़ा सा मेरे लिए डरावना Hmm. इंसिडेंस था। हम्म एंड आई वाज रीचिंग दिल्ली एट अराउंड 11:30 ish रात को, एंड आई वाज अलोन। सो व्हाट हैपेंड इज, एज यूजुअल मैं जैसे बाहर निकली, टैक्सी वाले सब आकर के, मैडम आपको कहाँ पे जाना है एंड ऑल। Hmm. सो मेरा स्टे बुक था एक आर्मी मेस में, दैट वाज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। तो जब मैंने टैक्सी वाले को बोला कि आर्मी मेस में जाना है, तो वो उसको थोड़ा सा लगा कि दिस लेडी हैज सम आर्मी सपोर्ट, कुछ तो कहीं पे हम्म कनेक्शन है, तब जाके इसको बुकिंग मिला होगा। तो वो होने के बाद व्हेन आई सैट इन द टैक्सी, मैंने इमीडिएटली फर्स्ट थिंग ये किया कि आई कॉल्ड अप माय फैमिली एंड आई लाइक टोल्ड देम कि मैं ये टैक्सी में बैठी हूँ, ये गाड़ी टैक्सी का नंबर ये है, एंड यू नो आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस मिलिट्री मेस, आर्मी मेस। तो ये लाउड एंड क्लियर सिग्नल टैक्सी वाले को भी मिल गया कि कहीं पे पीछे से इसको कोई ट्रैक कर रहा है। अगर Right. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सब टैक्सी वाले ऐसे ही हैं या फिर सब ऐसे हैं, बट एटलीस्ट ही हैज गॉट दैट सिग्नल वेरी क्लियर कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम करने का मैंने कोशिश किया तो somebody इज देयर टू ट्रैक हर। जब तक मैं पूरा उसको एंड तक छोड़ता नहीं हूँ तब तक आई हैव somebody who is tracking me. Okay. Plus, if you have someone in the city, make sure you call up that friend. किसी को भी आप कॉल करके बता सकते हो कि मैं आपके शहर में हूँ, आई एम गोइंग टू दैट सो एंड सो होटल ऑफ माइन, सो दैट प्रोबेबली ही कैन चेक। वो आपके ड्राइवर से बात कर सकता है, क्योंकि कई चीज़ें, कई एरियाज आपको पता नहीं होते जो Right. उनको पता होते हैं। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने मुझे
सीधा डायरेक्टली मिलिट्री अपना आर्मी मेस में छोड़ा. प्लस आई हैड अ ह्यूज सैक एंड माय ट्रैकिंग शूज. तो उसको वो इम्प्रेशन लगा कि दिस लेडी बिलोंग्स फ्रॉम सम Ami. आर्मी डिपार्टमेंट. तो हाँ. सो बट उसमें मैंने ये नहीं किया कि मैंने उसको, मैं ये बिल्कुल नहीं बताने गई कि मैं, नो आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद आर्मी, क्योंकि दिस इज फॉर आवर बेनिफिट ओनली. आप कैसा इम्प्रेशन उनके ऊपर क्रिएट करते हो, वो कई बार अपने बेनिफिट के लिए ही होता है. समटाइम्स यू नो यू हैव टू बी लुक वेरी स्ट्रांग एंड लुक वेरी दिस थिंग एडमेंट, या फिर थोड़ा सा दैट हेल्प्स, यू नो, इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन ऑड आवर्स, या फिर Absolutely. है ना, cities Yes. like Delhi. I'm I not think saying this is Delhi one point is that my unsafe. mom also tells me every time कि Yeah. हम्म. थोड़ा सा गुस्से वाला दिखो अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो and call and हाँ. चिल्ला के बोलो कि like that driver हम्म. knows that someone is keeping a track on you. And even when I take like Uber, Ola, I always share the tracking with someone in my family Yes. so that they're aware where Correct. I am. And again, it's very important to like you give the cab number to your to someone in Right. your family so that in case there's any emergency they can and another crazy thing that I do is मतलब अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो सबकॉन्शियसली ये आदत हो गया है कि मैं आसपास का जो एरिया रहता है ना जो शॉप्स रहती है हम्म. उनके बोर्ड के एड्रेसेस में पढ़ के रखती हूँ मतलब मुझे Hmm. पता चले मैं कौन से एरिया में हूँ Right. मतलब ऐसा नहीं क्योंकि काफी बार हम न्यू जगह पे जाते हैं तो पता नहीं रहता है कौन सी एरिया से हम जा रहे हैं सो आई ऑलवेज लाइक वो शॉप के नीचे लिखा रहता है ना राइट दिस इज द एड्रेस दिस इज द एरिया Hmm. सो वो इतना हम्म. सबकॉन्शियसली बैठ गया है कि आई ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग मतलब कैब में बैठते ही यू हैव टू चेक कि फोन करके बता रहे हो तुम्हारा उबर या हम्म. ओला का जो कैब राइड है वो आपने किसी फैमिली वाले के साथ शेयर किया है और दूसरा है कि आई ऑलवेज कीप ऑन सीइंग विच एरिया आई एम गोइंग थ्रू Forever. Right. Yeah. ओके विल मूव ऑन टू द I'd like नेक्स्ट to add. क्वेश्चन ओके अश्लेषा गो Yeah, I'll अहेड just like to add कि मैं क्या करती हूँ if I'm like taking a Uber ride or anything रात में वगैरह especially I have this habit that I either call my mom, my sister or like one of my friends and मैं उनसे बात करती हूँ not the whole ride at least but at least you know for like 5 or 10 minutes and जानबूझ के कॉल पे बताती हूँ कि हाँ अभी ऐसे एरिया में हूँ I'll just reach by like I'll pass this area in 10 minutes वगैरह you know so like indirectly वो टैक्सी वाले को या कैब वाले जो भी लोग हैं उनको भी सिग्नल जाता है कि हाँ लाइक समवन इज अप टू डेट विथ वेयर आई एम गोइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड यू नो लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक प्रोटेक्शन और समथिंग यू नो so it keeps me like my mind peaceful and like calm ki हाँ ठीक है I'm not in any sudden danger right now at least you know so that helps me Right. so I mean you वेरी guys can do that also. yes we have another question on food. We will come to that. But before that, Yes. I think another question जो हर ladies के दिमाग में आता है when they're planning the travel is washrooms. Availability of Yeah. washrooms, how clean they are or how safe they are. So is there anything specific to that that you would like to highlight or like talk about anything that we can carry? Uh, so washrooms, प्रीवियसली पहले तो इंडिया में क्लीन वॉशरूम्स या फिर वॉशरूम्स मिलना बहुत मुश्किल था. फॉर लेडीज इट वाज रियली अ पेन, आई नो. एंड सिटीज में फिर भी ठीक है, मिल जाएगा. बट सम कुछ रीजन्स जो होते हैं दे आर वेरी रिमोट लोकेशंस, तो वहाँ पे वॉशरूम्स मिलना, एंड वो भी क्लीन हाइजीनिक वॉशरूम्स मिलना थोड़ा सा अभी भी देयर इज अ चैलेंज. But nowadays we have some, due to some new research and new this thing, अपने पास we have a hygiene this thing, bathroom cleaner sprays or something, you Yeah. know, which Hmm. you can sanitize the seat of the washroom. Huh? Or else there is also I would like to add, there is one device which is called, which enables a lady to pee standing position. Yeah. I've Yeah, seen yeah, that it's somewhere. a Like someone cone had I think. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. PC something, ऐसा कुछ नाम है उसका, but हाँ हाँ हाँ. that enables a lady to just pee with a standing position. So that really helps, you know, mm, many hassles कि आपको
वो डर्टी सीट पे नहीं बैठना पड़ेगा या फिर अनहाइजीनिक सीट पे नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें एंड देन वी कैन मेक श्योर कि Yes, होगा। absolutely. And I always ensure to carry tissues with me, wet wipes, and हुँ, sanitizer, and that pee safe spray that is usually now it is Hmm. available everywhere in any of the medical shops. You will easily get that. तो वो ये सारी थोड़ी बहुत चीजें हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वॉशरूम्स फॉर वुमेन. ये सारी चीजें वी हैव टू अनफॉर्चुनेटली कैरी एक्स्ट्रा विद अस. कितना भी बोलो वो वेट वाइप्स टिश्यूज सेफ और थिंग एक चीज़ है एवरीथिंग. यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो एंड देन इफ यू सी सम होटल, रेस्टोरेंट और समथिंग, you can just go and tell them कि I would like to use the washroom, uh, and they cannot deny you the access. Hmm. They will have Yeah. to allow. That is the one law I think that is made, Yeah. and I'm actually not Recently, yeah, yeah. sure about the law, but we what we usually do is जाके बैठो एक जन कोई चाय ले लो and then everyone लाइन it लगा is के not बैठ required. जाते हैं. हाँ. Not required नहीं, actually. मोस्टली रेस्टोरेंट्स डू दैट, दे से कि कुछ ले लो या फिर कुछ डिश ऑर्डर करो, बट रिसेंटली देयर हैज बीन फ्यू अमेंडमेंट्स वेयर दे कैन नॉट चार्ज यू इवन फॉर लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर. You can use Right, the washroom or like have a glass of water without paying anything. Oh, that's right. great to know. Yeah. Okay, I think we'll move on to the next important question is food. Now, ऐसे होता है कि काफी बार हम न्यू जगह जाते हैं and we are very excited वहाँ की Hmm. delicacies try करने को या authentic cuisine try करने को. But like how do you go about that? If I'm not sure if it will suit me, if it will not Hmm. suit me. अगेन रिव्यू समटाइम्स अगर आप पहले से रिसर्च करके जाते हो कुछ, तो आपको कई बार वहाँ के लोकलाइट्स लिख के रखते हैं कहीं पे कि आप ये एंड ये सिटी में हो अगर, तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे खाना अच्छा मिलेगा आपको, या फिर ये पर्टिकुलर डिश आपको ट्राई करनी चाहिए, या फिर वो अच्छी है, या फिर ऐसे। तो Hmm. गो विद द रिव्यू, समटाइम्स इट रियली हेल्प्स। ऑल्सो आपको अगर वेदर यू आर वेरी नॉट वेरी हैप्पी विद लाइक स्पाइसी फूड, आपको अगर तीखा खाना पसंद नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप जब भी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर ऐसे फूड जॉइंट्स पे जाओगे, तो आप उनको बता के रख सकते हो कि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी कम चाहिए, थोड़ा सा ऑयली कम बनाना, या फिर ये सब चीज़ है। एंड पर्सनली आई बिलीव कि आप जहाँ कहाँ पे भी जाते हो ना, अगर रश है वहाँ पे, Hmm. तो वहाँ पे गरम खाना बनता है हमेशा, बिकॉज देर इज अ रश। Hmm. एंड गरम खाना इज ऑलवेज ताज़ा खाना, तो Fresh. आपको कभी वो ज़्यादा ये नहीं करेगा। आप कहीं पे भी अगर साइलेंट प्लेसेस पे जाओगे, जहाँ पे भीड़ नहीं है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे फ्रेश खाना नहीं बना है। एंड Right. जहाँ पे रेगुलर क्राउड है, तो यू नो कि इसका क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, सो मेनी पीपल आर ईटिंग इट, एंड ही इज कुकिंग फ्रेश फूड every every few hours, every half an hour or 1 hour. Hmm. तो आप उस वहाँ पे जाकर के खा सकते हो। दैट इज व्हाट माय पर्सनल बिलीफ इज लाइक। ग्रेट ग्रेट टिप. आई थिंक काफी बार हम ये छोटी छोटी चीजें देखना और पहचानना Hmm. भूल जाते हैं. बट एब्सोल्युटली बिकॉज इफ यू आर ट्रैवलिंग यू वुडंट वांट कि आप कुछ खाना खा रहे हो और आपका पेट खराब हो गया बिकॉज देन अगेन दैट Hmm. लीड्स टू होल अनदर सेट ऑफ इश्यूज. सो इट्स ऑलवेज सेफर टू लाइक टेक केयर ऑफ दिस छोटा छोटा चीजें कि जहाँ पे रश है वहां पे खाओ. एंड अगर आपका कोई प्रेफरेंसेस है जैसे स्पाइसी कम Hmm. ऑयली कम और वट एवर. एंड नाउ कमिंग बैक टू टाइप वन. So me and Nupur have been traveling a lot since like last year. So I know that Nupur का तो मतलब somehow luckily we always find low carb things somewhere or the other. And especially in India, I think eggs are easily available everywhere. So Hmm. Yeah. हमेशा हम लोग like omelets, भुर्जी वो सब आपको आराम से मतलब आप बोल भी दोगे तो they will make it. If they don't have it in the menu, they will still Hmm. make it for Hmm. you. So I think eggs is an option which is easily available. Salads भी आपको मतलब
यू विल नॉट गेट द फैंसी सलाद जो आप घर पे बनाते हो विद सलाद ड्रेसिंग एंड ऑल, वो सब नहीं मिलेगा, Yeah. बट एटलीस्ट ककड़ी, गाजर, बीटरूट, ये सारा है वो आप ले सकते हो. And usually I Hmm. what I personally do is like I try to avoid, like completely avoid maida, because if you are eating Hmm. outside there's a high possibility that everything that you get, like that spicy starters or like anything which is like fried, is usually deep fried in maida ka batter. So Hmm. I ensure like Okay. to avoid that completely, because maida will like spike your sugars like crazy, बहुत ज्यादा अफेक्ट Hmm. करेगा. तो एंड यूजुअली यू स्टिक टू तंदूर, मे बी तंदूर पनीर या वो वेजीज भी आता है सीख इसमें डाल के, Hmm. या तंदूर चिकन और वॉट एवर, बिकॉज दैट इज, उसमें क्या है, कुछ बैटर नहीं है, और देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ देम एडिंग एनी क्रीम और लाइक एनीथिंग स्वीट इन, बिकॉज इवन इफ आप सब्जी का ग्रेवी देखते हो, उसमें काफी बार लोग शक्कर भी डाल देते हैं, काफी बार क्रीम रहता हाँ. है, विच कैन बी अ Hmm. लॉट, विच इज हैवी, हाई ऑन कार्ब्स एंड अगेन हाई ऑन शुगर्स. तो काफी आपको अफेक्ट करेगा शुगर्स को. तो आई ऑलवेज लाइक, वी ऑलवेज एंश्योर टू चेक, टू आस्क, टू टॉक टू द होटल ओनर दैट ये चाहिए, ऐसा ही Hmm. चाहिए. Hmm. एंड यूजुअली व्हाट वी डू इज लाइक, इफ यू आर इवन गेटिंग एन ऑमलेट जैसे डिश रहेगा उसमें, तो उसके साथ यूजुअली गिव यू सम टोस्ट और लाइक सम ब्रेड. अगर आपको नहीं चाहिए तो Hmm. यू कैन ऑलवेज टेल देम कि भाई एक जो ब्रेड है वो मत दो, और उसके रिप्लेसमेंट में यू Hmm. मेक मी एन ऑमलेट ऑफ 3 eggs और लाइक 4 eggs इंस्टेड ऑफ आपका जो भी है. सो यू कैन ऑलवेज मॉडिफाई थोड़ा आगे पीछे. एंड आई थिंक विथ एग्स इट बिकम्स रियली इजी. वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, Right. बट Hmm. एज अ टाइप 1 डायबिटिक आई ऑलवेज कैरी माई फूड विथ मी इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड हैव टू कीप माई शुगर्स इन चेक. सो आई ऑलवेज कैरी चना. There's Hmm. always a box of dates. I always carry biscuit Yeah. also with. I don't eat Hmm. biscuits as such, but एक बिस्किट का पैकेट, वर्स्ट केस कि आप कहीं पे हो और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यू एटलीस्ट हैव चना, Hypocrite. खजूर है. चना, Yeah. खजूर, बिस्किट, एंड ऑलवेज कैरी खाकरा विथ मी, बिकॉज आजकल वो ऐसे छोटे Hmm. पैकेट्स में मिलते हैं, इजी टू कैरी, यू कैन कीप इट एनीवेयर. Yeah. एंड अगर वर्स्ट केस बहुत भूख लगी है एंड कुछ भी नहीं है अवेलेबल, then you can easily have like 2 khakras and you will be like feeling full and your sugars can be managed. I think that this is all I carry. मतलब हमेशा मेरा बैग बहुत बड़ा रहता है, but it is what it is. You have to carry. ये थोड़े बहुत important चीजें हैं. Anything Hmm. else that you carry, Ashlesha, with you? या मोस्टली लाइक इन माय ग्रुप जब हम लोग जाते हैं मेरे पास ही सारा स्नैक्स होता है बिकॉज यू नो माय डायबिटीज सो आई ऑल्सो कैरी लाइक देयर इज लाइक नींबू पानी आई कीप लाइक अ स्पेयर बॉटल फुल ऑफ नींबू पानी ऑल्सो विथ मी देन खजूर होता है लाइक यू सेड बिस्किट्स होते हैं सो लाइक माय फ्रेंड्स नो कि अगर कहीं पे भी कुछ नहीं मिला तो इसके पास स्टॉक पड़ा है हम लोग ले लेंगे तो या वो एक अच्छी आदत बन गई है बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड यू नो लाइक ट्राइंग टू ट्रैवल एंड एवरीथिंग आई मेक श्योर कि मतलब आई नो लाइक 24 आवर्स मिलते ही हमें कोई ना कोई स्पॉट होता है यू गेट फूड इजीली वो इशू नहीं है बट इट जस्ट इट बिकम्स इजी बिकॉज अभी हमें पता है कि कौन सी चीजों से शुगर हमारी बढ़ जाएगी कम होगी तो यू नो जस्ट इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव एटलीस्ट समथिंग विथ यू एट ऑल टाइम्स मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद का सिचुएशन है बट या एंड काफी ऑलवेज बार जो कीप मैं थोड़ा पैक सा करके स्नैक्स ले, फॉर यू मैं जो पैक करके ले जाती हूँ वैसे ही वापस आता है. मोस्टली उसको ओपन हाँ करने का चांस ही नहीं मिलता है. बट जस्ट इन केस, लाइक आई थिंक एज अ टाइप 1 डायबिटिक यू ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनारियोज बिफोर हैंड, राइट? कि इन केस यू आर स्ट्रैंडेड एंड यू डोंट नो एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग, तो आपके या पास सब कुछ है. And I'll like to share one story. Is like last year when me and Nupur and our another friend, we were traveling to Switzerland. That was my first time actually traveling abroad. And unfortunately, we landed in a very stranded small town of Germany. We don't know how ओके did we land there. मतलब ट्रेन ट्रैवल कर रहे थे and गलती से कोई गलत ट्रेन पकड़ लिया, वो स्टेशन पे जाके रुक गई. And उधर हाँ कुछ भी नहीं था. There was no board or like no announcement of like when the next train is going to come. और हमको, और एक भी इंसान नहीं है वहां पे जिससे आप पूछ सको कि ट्रेन आने भी वाली है कि नहीं आने वाली है, क्योंकि हमको जाना था ज्यूरिक. एंड वी वर स्ट्रैंडेड ओवर देयर फॉर एटलीस्ट 2.5 hours. एंड बहुत ज्यादा ठंड थी और हमको लगी थी बहुत भूख. सो आई हैड खाकरा विद मी. तो वो खाकरा का, वो एक ही खाकरा का पैकेट वो यूज हो गया वहां पे भी, एट थोड़ा सा. एंड उतने टाइम रुकने के बाद वो ट्रेन आया. सो इवन दो लाइक वी वेर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि यहाँ से ये ट्रेन पकड़नी है, वहां से वो ट्रेन पकड़नी है, बट यू नेवर नो बीच में कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है. सो लकीली आई हैड दैट फूड विथ मी एंड वी वर एटलीस्ट एबल टू मैनेज वो 2-3 घंटा. तो दैट इज ऑल्सो लाइक
that's why it's important to keep it with you. मतलब even though ऐसे खाकरा नहीं खाएंगे हम लोग, because again it's high carb and Hmm. sugars पे impact होगा, but just in worst case scenario, if you are stranded और कुछ भी नहीं है, तो keep yourself full, at least that will help you. मतलब रोज के डाइट में तो हम बिस्किट और इतना खाकरा या कुछ ऐसा खाएंगे नहीं, Exactly. बट इफ यू आर ट्रैवलिंग इट्स इजियर टू कैरी समथिंग जिसका इम्पैक्ट आपको पता हो कि ब्लड शुगर्स पे कैसा होगा. Hmm. Okay. Another question that we have received is, so when we check out the reviews, जो Google पे हम reviews वगैरह देखते हैं और ratings देखते हैं, how much do you Hmm. trust them? Yeah. कितने reliable होते हैं वो? हाँ. Like my finding is normally उसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. कभी-कभी Hmm. बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो देखा था रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं एंड एक्चुअल में Hmm. होटल इतना अच्छा नहीं है. बट नॉर्मली क्या होता है कि रिकमेंडेड में होटल्स आते हैं ना, तो Hmm. फेक रिव्यूज़ थोड़े कम ही हो जाते हैं. Hmm. Sometimes, fake reviews you can even make out with the language and everything. You can make Hmm. out कि हाँ ये सही नहीं है, ये फेक रिव्यू लग रहा है ऐसे. आजकल फोटोज भी डालते हैं लोग, तो Hmm. मैनेजमेंट के फोटोज से ज्यादा ट्रैवलर्स के फोटोज डाले हुए होते हैं ट्रिप एडवाइजर पे. तो वो थोड़ा और ज्यादा इंसाइट देते हैं आपको. मैनेजमेंट ने डाला होगा कि बहुत अच्छा क्लीन वॉशरूम है, या फिर बाहर से खिड़की के बाहर से देयर इज अ अमेजिंग व्यू. और ट्रैवलर ने ट्रैवलर ने कई बार दिखाया होता है कि ये ऐसा है, ये नहीं है. विंडो इज ब्रोकन, Review हाँ है. टॉयलेट. तो आई थिंक गो विद द ट्रैवलर्स रिव्यू, क्योंकि वो Hmm. काफी ऑनेस्ट रहते हैं फिर. एंड ऑल्सो चेक ऑन द एरिया. कई बार अगर आपकी कोई पहचान में अगर उसी सिटी में है, तो आप चेक करो कि सो एंड सो होटल अगर मुझे बुक करना है तो वो कौन से एरिया में है. क्योंकि कई बार एरिया भी मैटर करता है कि वो कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, वेदर इट इज़ अ गुड एरिया, सेफ टू स्टे देयर, या फिर वेदर द होटल इज गुड. तो ये आप वहाँ का किसी अगर लोकल बंदे से अगर पूछेंगे डायरेक्टली, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं. एरिया वाइज भी आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ अ हाई बजटेड होटल या फिर मिड रेंज का होटल है, या फिर अब बहुत ही बजटेड होटल है विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एज एट द पॉइंट ऑफ वुमेन सेफ्टी एंड ऑल. तो वो आपको पता चल जाएगा. एंड ऑल्सो ट्रैवलर्स के रिव्यूज़ देखो, Hmm. तो आपको आइडिया और ज़्यादा आ जाएगा. इन केस अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हो, ट्राई टू कॉल अप द होटल. नॉर्मली आप जब मैनेजर से बात करोगे, आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि द वे दे टॉक एंड वो आपको बताएंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये दे लुक रिलायबल, या फिर हेल्पफुल लग रहे हैं, या फिर ये लग रहा है. Hmm. Another तो thing that I learned last year was like traveling to a completely new country. I started reading a lot of blogs. जो पर्सनल ट्रैवल ब्लॉग्स रहते हैं उसमें भी वो लोग काफी Hmm. इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर ये एरिया में जाना है तो ये रूट से जाओ, या टेक अ बस और टेक द ट्रेन और टेक द ट्रैम और वट एवर. तो पर्सनल ब्लॉग्स, और आजकल बहुत मतलब देयर इज नो डर्थ ऑफ थिंग्स, Yeah. इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल. गूगल पे, ट्रिप एडवाइजर पे, एयरबीएनबी पे रिव्यूज है. जैसे मधुवंती Hmm. ने कहा, यू कैन इवन लुक फॉर द पिक्चर्स जो ट्रैवलर्स ने खुद ने डाले हुए पिक्चर्स है, रादर देन ट्रस्टिंग जो कंपनी ने और या होटल होटल वालों ने डाले हैं. उसको ट्रस्ट करने से Hmm. ज्यादा बेटर होगा कि आप लोगों के एक्चुअल ऑनेस्ट रिव्यूज और पिक्चर्स देखें. एंड आई थिंक रीडिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स आल्सो हेल्प मी अ लॉट टू प्लान. जैसे अगर आपके पास एक ही दिन है या 2 ही दिन है और आपको मेजर चीजें सारी कवर करनी है, तो देयर आर लॉट ऑफ करनी हेल्पफुल है. ब्लॉग्स आउट देयर that will help you. And I think I'll also like to ask Madhuvanti to like let us know of your page, wherein if any of our Yeah. community members want to reach out to Yeah. you for help, where they can look for Hmm. you. Okay, so I have my Facebook page with the name of Our Only Planet. Um, so you can look for, or else you can just search on for my profile. My name is Madhuvanti Godse. Also, I have my website, which is www.ouronlyplanet.com.
dot our only OURONLY planet PLANET dot in. तो ये वेबसाइट पे भी यू कैन जस्ट access and get in touch with me. Also, Facebook पे you will find our only planet का page. You can get in touch and get the updates for my upcoming trips. Absolutely. And I think there will be a lot of comments from other travelers also वहाँ पे वो पेज पे Hmm. आपको मतलब जो भी Yes. हेल्प चाहिए you can reach out to other people on her page also जो travel कर चुके हैं and you can take bits and pieces from their experience and try to intertwine it with yours Right. like how your travel will be. Yeah, even I'm on Instagram if somebody wish to, with our only planet travel. Okay. So our only planet is Yeah. their thing. You Yeah. can search them by on that with Google, Facebook, Instagram. I think Yeah. you'll find them everywhere. I think that's really great to know that if any of our community members want to reach out and as females they want to travel or start traveling in groups or solo travel maybe they can definitely reach out to you and your page and like maybe plan their trips accordingly. Okay. I think we're almost up for the time and no further questions. But before we end or like we chit chat more, my next question would be to you: what has been your best travel so far? Like we would like to know more Yeah. about that. Story of it. Yes. एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी चीज से या फिर ऐसे फैसिनेट होते हैं ना बहुत ज्यादा कि वी हैव हर्ड अबाउट ले लद्दाख अ लॉट या फिर Hmm. कश्मीर हम लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ब्यूटीफुल होगा। तो कब कई कई बार ऐसा हुआ है कि व्हेन आई ट्रैवल टू गुजरात एंड आई वाज ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप एंड बीच में एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए सिर्फ मैं अकेली ही घूमने वाली थी एंड माय ग्रुप वाज अबाउट टू जॉइन मी, सपोज टू जॉइन मी लेटर आफ्टर वन डे। Hmm. मेरे पास एक दिन था एंड गुजरात में राजकोट और जामनगर जूनागढ़ ये दोनों के बीच में देयर इज अ वेरी लेस नोन टाउन जिस जहाँ पे मेरा स्टे का अरेंजमेंट था। दैट वाज डन बाय माय ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स। तो मेरे पास तभी कोई ऑप्शन नहीं था, बट इट एक्चुअली प्रूव्ड अ गुड वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी, जो मैंने कभी नाम सुना नहीं था। गोंडल करके एक छोटा सा गांव है एंड इट प्रूव्ड लाइक गोंडल में देयर वाज अ किंगडम, लाइक एक राजा थे वहाँ के एंड उनके वहाँ पे कुछ पैलेसेस हैं बने हुए। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है एंड आई कुड एक्चुअली जस्ट विजिट द गोंडल कंप्लीट विलेज बाय फुट, क्योंकि वो इतना छोटा सा प्यारा सा Hmm. शहर मतलब गांव है कि मैं पूरा चल के घूम सकी। वो नौलखा पैलेस एंड सम टू थ्री पैलेसेस, कुछ म्यूजियम्स थे वहां पे, द टिपिकल कार म्यूजियम, Hmm. प्लस जो राजा था उन्होंने एक उनके लिए एक ट्रेन स्टेशन बनाया था एंड देयर इज अ मिनी ट्रेन स्टेशन एंड अ मिनी ट्रेन, कंपेयरिंग उनका उनके लिए खुद के लिए एक प्रॉपर हाँ. डब्बा। ये सब देखने में बहुत मजा आया था मुझे, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। प्लस खाने पीने का तो प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि सभी जगह पे Hmm. यू हैव सम स्मॉल ढाबाज, छोटे छोटे होटल्स एंड गुजराती थालीज टू टेक केयर ऑफ ऑल योर फूड नीड्स। तो दिस केम एज अ सरप्राइज फॉर मी, गोंडल। तो whenever कभी जभी कभी somebody is planning for गुजरात या फिर गीर या फिर जूनागढ़ या फिर कहीं पे जाने वाले हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि अगर आप वो साइड जा रहे हो तो जस्ट गो टू गोंडल एंड यू विल लव इट। सो yes, there's so many other places also which I love. ले जैसे मैं अकेले गई थी तो it's amazing. ले में भी you will have very nice people who actually help you a lot. इंडिया में आप कहीं पे भी जाओगे ना, सिटीज से ज्यादा आपको गांव में लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। कई बार सिटीज में वो एक इनहिबिशन होता है, बट आप कहीं पे भी Hmm. गांव में जाओगे तो एक क्यूरियोसिटी होता है उनके दिमाग में कि ये कहाँ से आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वो आप आपके साथ में बात करेंगे, आकर के आपको हेल्प करेंगे।
वो लोग ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं। तो अदरवाइज़ आई हैड नो बैड एक्सपीरियंसेस एज़ सच। कहीं पे भी मैं गई हूँ तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने बिल्कुल हेल्प नहीं की या फिर कुछ गलत एक्सपीरियंसेस आए हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। जो प्रिकॉशंस मैंने लिए थे ऑफ कोर्स दैट इज़ वन थिंग, बट अदर दैन दैट ऐसा कुछ भी कभी हुआ नहीं कि मुझे किसी चीज़ के लिए आई एम स्केयर्ड या फिर कुछ वरीसम चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में। तो लाइक वी जस्ट हैव टू कॉल अप, लाइक कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ बात करिए लोगों से एंड दे आर देयर टू हेल्प। यू नो एज दे से कि पूरा जमाना गलत है करके लोग आजकल बोलते हैं कि बाहर निकलना है तो यू हैव टू बी केयरफुल, जमाना इतना अच्छा नहीं है। मगर मुझे लगता है कि ना 100% में से एक लाइक से 10% लोग गलत हो सकते हैं, बाकी के 90% तो अच्छे होंगे एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। तो यू शुडंट बी लाइक टेकन अ बैक कि नहीं ये गलत लोग होंगे या फिर मैं कैसे ट्रैवल करूंगी या फिर डर लगेगा या फिर कुछ ऐसे। तो आप ट्रैवल कर सकते हो एंड इंडिया इज अ वंडरफुल कंट्री, वंडरफुल पीपल, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। I think we have to take in all the experience and be ready to take in all that experience, try out new things, explore new places, and make connections to people. I Yeah. think that's all there is to travel. But again, like traveling with diabetes, maybe a lot of people have that inhibitions कि कैसे करेंगे, इतना सारा सामान हो लेके जाना पड़ेगा। वो तो है, you always have to, like diabetics, like our page just mentioned, diabetics carry the biggest bags ever. हम हमारा भी खाना लेते हैं, दूसरों का भी खाना हमारे साथ ही रहता है। But again, it's all about the experience. Ashlesh, I can relate because we always Yeah. have to carry, and then people depend on you कि ये तो लेके आएगी, and then you have to think अरे ये तो मेरा खाना है, दूसरों के लिए और एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है। Extra. Yes, but again, you have to be थोड़ा सा cautious about your medical condition, and like Madhuvanti said, you have to do your own research. Just don't go blindly. Do your own research about the place where you're staying. Call up the hotel. Read some blogs. Read some reviews. आजकल YouTube पे भी काफी सारे travel channels है where you can Yeah. just go and take a look at that. And again, we have Exactly. Madhuvanti's page or our only planet. You can go there and like check out. I'm sure there will be a lot of information available over there also. And we have a few blog links which are mentioned in the comments. If you have Yeah. anything related to diabetes and travel, you can read that, and like how to avoid a hypo. Another quick thing that I do is like I always ensure my sugars are not extremely on the manageable side. I always try to keep it a little on the higher side. मतलब usually normal बोलेंगे 100 to 140 maybe. I always keep it around 160, 180 के आसपास, because I don't mind staying at 160, 180 rather than staying at like 70 or like going below that, because Yeah. hypos can be होने really, के. can escalate quickly. You never know how dangerous it can be. Hmm. So one of the thing that I do, like especially even if it's a trekking or it's a walk or it's a run, I always ensure that my sugars are a little like 10, 20 numbers higher than what I usually prefer, because just to be safer than even if you carry a medical ID card, even if everything is there with you, just in case something happens and people panic and they don't know what to do with you, and आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, किसी ने डॉक्टर ने अगर किसी ने बताया नहीं डॉक्टर को कि इसको टाइप 1 डायबिटीज है, so they will not know, Right. right? In case if you are in a hypo, then that can quickly become very dangerous. Hmm. So it's always, I do that personally for myself, is always keep my sugars a little, Hmm. like little on the higher side rather than keeping it in range, which we all usually do. That is also another tip and trick. And like we said, we talked about always having twos of everything. हर आपका Hmm. मेडिकल किट जो है आपके दो होने चाहिए, वन वन विच यू कैरी विथ यू ऑल द टाइम, एंड द अदर इन योर बैग. एंड जो जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसमें से 2-3 जन को तो पता होना चाहिए दैट यू आर traveling with type 1 diabetic as a medical condition, Right. so that they are aware. And always again, safety precaution, be a little bit cautious, Yeah. but other than that, I think you have to enjoy the complete experience of traveling, be open and be ready to take on to that. I think that would be the key takeaway from today's session. Ashleja, you want to add something?
Yeah, just I actually had a question for Madhvanti ji. I wanted to know, according to you, what is the best way to explore a new place or new city? क्या plan करना चाहिए? I mean, apart from the museums and famous places, but how can you get to know a particular city or place? Uh, Again, I'll say talk to local people. That is the Hmm. best thing. आपको कई बार टूरिस्टी चीजों से थोड़ा कुछ अलग देखने को मिलेगा हमेशा. Yeah. If you're staying, for example, आप अगर कहीं पे एयरबीएनबी में रुके हो, तो आपने उनके वो ओनर से ही पूछ लिया कि यहाँ पे क्या है और देखने के लिए. तो कई बार आपको वो ऐसी चीज बताएंगे जो कहीं पे भी आपके मीडिया अपने इसमें गूगल में कहीं पे भी लिखा नहीं होगा, वो मेंशन नहीं होगा, बट वो कुछ और ही अच्छा सा रहेगा, टूरिस्टी थिंग्स से कुछ हटके रहेगा, और वो Yeah. काफी अच्छा रहेगा. तो लोकल वहाँ के लोगों से बात करिए. इफ यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, आपको ट्रेन में कोई मिल गया, यू कैन जस्ट टॉक टू देम कि मैं यहाँ यहाँ पे जा रही हूँ, तो व्हाट कैन आई सी फर्दर. एडिशनल तो है ही, हाँ, म्यूजियम देखना है, फिर कुछ और देखना है, उसके साथ में और क्या देख सकते हैं, एंड दे विल कम अप विद सम वेरी अमेजिंग थिंग्स टू सी. कई बार ऐसा होता है कि सम डेस्टिनेशंस भी आर नोन फॉर बीचेस, गोवा में फॉर Hmm. एग्जांपल. बट गोवा में देयर आर सो मेनी हिडन थिंग्स जो नॉर्मली कई बार अभी तक गूगल में नहीं है, मगर वो लोकल्स से आपको पता चल सकते हैं कि ओके, आप यहाँ पे जा रहे हो, बट फिर आप ये भी ट्राई, ये Hmm. भी देख, या फिर ये एक पर्टिकुलर हिडन बीच है या वहाँ पे है, या फिर एक Hmm. टेम्पल है, एंशियंट टेम्पल है. तो ये सब चीजें आपको वहाँ के लोकल लोगों से पता चलेगी. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर ओन कैब, तो आपके ड्राइवर से आप अगर बात कर रहे हो, तो उसको आप पूछो कि यहाँ पे ये Hmm. पर्टिकुलर ऐसा अच्छा खाना, ऑथेंटिक खाना कहाँ मिलेगा. तो प्रोबेबली ड्राइवर विल गिव यू गुड डायरेक्शंस कि आपको अच्छा, आपको कौन सा कैसे Hmm. खाना पसंद है. तो ही विल सजेस्ट यू सम रेस्टोरेंट्स, सम फूड जॉइंट्स, और जो काफ़ी ऑथेंटिक होगा, काफ़ी काफ़ी पॉपुलर होगा, तो यू कैन यूज़ ऑन दैट. तो मुझे लगता है ये Hmm. लोगों से बात करके काफ़ी चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व हो सकती है. यू Yes. कैन जस्ट, Sure. हाँ, लाइक गोंडल में हुआ था या फिर ऐसे. Absolutely great tips that were shared today. We talked a lot about traveling, and especially for women travelers who want to try and take that first step towards traveling, and then probably think of traveling solo, what all to take care of when you're traveling with diabetes, what all things to carry. And again, if you have any questions for us, leave them in the comment section, or you can reach out to us on all our social media handles. We are there at Blue Circle Diabetes Foundation, or you can schedule a call with us on our psychosocial helpline, which is called as the Buddy Project Helpline. It is free and open for all, highly confidential. Data is not shared anywhere. So feel free, reach out to us. And again, what would like to highlight Madhuvanti's page, which is Our Planet, Yes. Our Only Planet. You can search her on that, and we'll put her links also after this video is Yeah. uploaded. We'll tag her and her thing, but Our Only Planet, you Yeah. can search them on all social media handles. You'll find their information there, and probably if you're planning to take a trip, you can get in touch with Madhuvanti and have that experience with you. But again, thank you everyone for joining us today on a Sunday evening, and I think we will be signing off now. So we'll see you on next Sunday. Thank you all. Bye. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.